Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today my dear students I am going to discuss the fourth world of flower. So let's move to the light pole. So dear students, we are discussing the structure of flower. And in the previous lectures, we have discussed the three worlds. Total, there are four worlds. The first world that is called as calyx, that is the outermost. Then the second world that is corolla. Then there is the third wall, that is called as androecium, which is the male reproductive part. And the fourth one, which we are going to discuss today, the fourth world that is gynoecium, and it is the innermost world, so dear students, today we are going to discuss this fourth world. इससे पहले हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्ल्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं. और ये स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा से थोड़ा सा बताता चलो वर्ल्ड क्या होता है. सो ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट अ सिंगल नोड और वन नोड इन द फ्लावर इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड. और फोर्थ वर्ल्ड, that is gynoecium. It is the female reproductive world. इसके अंदर मौजूद हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, the individual units of gynoecium are called carpel or pistil. Now its structure. इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा डियर स्टूडेंट्स? इट इज इंपॉर्टेंट. द स्ट्रक्चर ऑफ carpel, it consists of the upper stigma, middle style, and the basal ovary, which contains ovule. The ovary contains ovule,
that might be one to many, एक भी हो सकता है ओव्यूल और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं विद डायग्राम। So here I am going to draw the female reproductive organ of flower. Now I am going to label. This part is called as stigma. This region is called as style. This is basal ovary. And inside ovary is present. These are the ovules. Dear students, now I am going to discuss its parts in detail. So first of all, I am going to discuss ovule because ovule के अंदर मौजूद हैं वो तमाम रिप्रोडक्टिव सेल्स जिन्होंने आगे चलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है. So in ovules, the ovule consists of diploid spore mother cell, which is represented by 2N. Spore mother cell. This spore mother cell undergoes meiosis, the reduction division, and forms haploid macrospores, which are 1N. डियर स्टूडेंट्स, साइज की बेस के ऊपर ये स्पोर्स के नाम रखे गए थे. माइक्रोस्पोर जो हमने इससे पहले पढ़ा पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं. उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है एज कंपेयर टू द मैक्रोस्पोर. मैक्रो का मतलब लार्ज, या इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल होती है मेगास्पोर. तो मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर दोनों ही करेक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं. तो हमारे सिलेबस के अंदर इसको मैक्रोस्पोर के नाम से डिफाइन किया गया है. So macrospore mother cell undergoes meiosis, that is the reduction division. तो ये diploid है, so it forms haploid macrospores, the daughter cells. Clear? And the macrospores, daughter cells, germinate to form the egg cell, which is haploid 1N, plus fusion nucleus, that is diploid
and some associated structures. So dear students, वो associated structures क्या होंगे? Actually, initially there are formed 8 cells by the mitosis in the macrospores. Macrospore जो डॉटर सेल है, जो हैप्लॉइड है, उसके अंदर माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस होंगी और उस माइटोसिस के नतीजे में 8 सेल्स बनेंगे और उनमें से जो सेंटर में 2 सेल होते हैं वो फ्यूज़ करके फ्यूजन न्यूक्लियस बना देंगे जो कि डिप्लॉयड हो जाएगा. सो नाउ दे विल बिकम 7 सेल्स और उनकी डिटेल क्या है आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो यहाँ से सिर्फ ओव्यूल, एक ओव्यूल को मैं डिटेल के साथ शेयर करने लगा हूँ. सो दिस इज मैक्रोस्पोर, ये एक मैक्रोस्पोर और नॉर्मली इसके गिर्द होती हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जिनको कहा जाता है इंटैगुमेंट्स. इंटैगुमेंट्स, this is integument. Integument mean these are the protective layers around macrospore or which we also called as megaspore. इसको मैक्रोस्पोर भी कहते हैं, इसको मेगास्पोर भी कहते हैं. इन प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को नाम दिया जाता है इंटैगुमेंट्स का और इसके अंदर मौजूद है यहां पर दिस इज द मैक्रोस्पोर. दिस इज मैक्रोस्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोरेंजियम भी इसे कहा जाता है. तो मैक्रोस्पोर जब जर्मिनेट किया था तो उसने बनाया था एक सैक, उसे कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजियम. और मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डियर स्टूडेंट्स जब जो मैक्रोस्पोर मदर सेल है वो उसने डिवाइड किया मियोसिस के ज़रिए और प्रोड्यूस किया मैक्रोस्पोर डॉटर सेल. तो जब डॉटर सेल जो है दिस इज मैक्रोस्पोर डॉटर सेल, जब ये जर्मिनेट होगा तो ये एक और सैक बनाएगा, इसी के अंदर एक और सैक बनाएगा. That will be called as the embryo sac. Embryo sac या फिर इसी को कहा जाता है this is the female gametophyte. तो यहीं पर मैं रोक कर दोबारा से आपको तरतीब बताने लगा हूं, आपने नोट करनी है. एक फ्लो चार्ट की शक्ल में मैक्रोस्पोर मदर सेल which is diploid, it undergoes meiosis और इससे प्रोड्यूस होंगे मैक्रोस्पोर डॉटर सेल. चूंकि मियोसिस हुई है तो उससे इट विल बिकम हैप्लॉइड 1n. और मैक्रोस्पोर डॉटर सेल जब जर्मिनेट करेगा, व्हेन इट जर्मिनेट्स इट फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक. और फीमेल गैमेटोफाइट डियर स्टूडेंट जब गैमेटोफाइट होती है वो माइटोसिस के जरिए इट अंडरगोस माइटोसिस, चूंकि ये हैप्लॉइड होती है, इट अंडरगोस माइटोसिस टू फॉर्म गैमीट्स. और गैमीट जहां पे कौन सा होगा, फीमेल गैमीट. चूंकि फीमेल गैमेटोफाइट इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट दैट इज एग सेल व्हिच इज हैप्लॉइड प्लस एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. तो क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने मिक्स नहीं करना, इस तरतीब को याद रखना है.
और ये मैक्रोस्पोर मदर सेल कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है डियर स्टूडेंट, इससे भी पीछे चले जाते हैं, दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड द मैक्रोस्पोरेंजियम। और मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये मैक्रोस्पोर बना, फिर उसके अंदर मदर सेल, देन डॉटर सेल, इसने जर्मिनेट किया, तो फिर उसके अंदर एक और सैक बन गया, यानी मैक्रोस्पोरेंजियम के अंदर एक और सैक बन गया, दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक। और इसमें जब जर्मिनेशन होगी तो इसमें प्रोड्यूस होंगे सेल्स। इनिशियली they are 8 in number, but after that they become 7. So 3 ऊपर वाले साइड पे, 3 जो है नीचे 6 और दरमियान में 2 8, लेकिन ये दोनों फ्यूज करके एक ही सेल में आ जाएंगे। नाउ इट बिकम्स द फ्यूजन न्यूक्लियस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो ये उसके वाले से कुछ डिटेल है। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे इसकी लाइफ साइकिल को, तो उसमें मजीद इसके डिटेल आएंगी इन सेल्स के हवाले से। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, दैट इज रिगार्डिंग द थियोफ्रास्टस। Theophrastus, basically, he was the successor of Aristotle, यानी कि एरिस्टोटल का ये जानशीन था। He was a philosopher. He laid solid foundation of botany. उसने बॉटनी की सॉलिड फाउंडेशन लेकी, and then he also described anatomy and physiology, means the normal functioning of flowers, as well as he discovered the gender in flowers, means के male and female plants and female sexes, he also described the mechanism of pollination and fertilization. So dear students, this portion belongs to short question. ये important short question है, आप नोट कर लीजिएगा। Write down the contribution of Theophrastus, or who was Theophrastus, what is his contribution. तो आपने याद रखना, he was a successor of Aristotle, he was a philosopher, he laid down the solid foundation of botany, he described anatomy and physiology of flowers, also he described and discovered the genders in flowers, यानी कि male and female sexes in plant, and also described the process of pollination and fertilization in the plants. So dear students, आपने देखा कि जो fourth whorl है, it carries the female reproductive part, the third whorl it consists of the male reproductive part, so that is why these outer two whorls are called as the reproductive whorls. So hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।